Hello, my dear students, how are you? I think you are all very fine. And now in this video, we are about to start the linear magnification for the mirrors. Actually, what is the meaning of the magnification? First, magnification, its meanings to increasing the length of the image in comparison to the objects. Actually, the word magnification means when we want to see anything, our eyes and other the optical instruments increase the size of the image. Okay, this is called magnification. Actually, that's considered that there is an object, the actual length with 10 centimeter. It is the actual length of this object. When we see this object, okay, by eyes, so object will see in actual 10 centimeter also. Okay, but if we see this object 10 centimeter by any optical instrument, we see this object at 20 centimeter. So the optical instrument increase the size of the object as image is 2 times. That means to say this is the magnification. Okay, and the optical instrument magnifies the object. Are you understood what I am saying? Actually जब हम लोग कोई चीज देखते हैं तो हमारी आंख पर होता क्या चीज है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है ना। और जब इमेज को हम देखते हैं तो इमेज कभी कभी क्या होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की होती है या फिर ऑब्जेक्ट से ग्रेटर साइज की होती है. दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, टू चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज. इमेज में जब ऑब्जेक्ट से भी डिफरेंट साइज बनती है, कभी बड़ी कभी उससे छोटी, तो हम इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं. Actually, at this standard, what we will understood about this fact about magnification. So I want to tell you that a magnification means in comparison, a comparison between the size of image and the size of the object. When we say that the image size is 2 times greater than that object, so we say a comparison, we give a comparison in image and the object. Okay, so magnification means comparison in the size of the image and the object. In general definition, what is the magnification? So we can say the ratio between the height of the image and the height of the object is called linear magnification of the स्फेरिकल मिरर और द मिरर. ओके, जब हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं किसी स्फेरिकल मिरर के फ्रंट में, तो होता क्या चीज है, उस मिरर से उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है. तो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन. एक्चुअली ऑलवेज ऑल द टाइम रेशियोज गिव द कंपैरिजन 4/2. दैट मीन टू से 2, इट्स मीनिंग इज 2 टाइम्स ऑफ द. So 2 is 2 times, 4 is 2 times of 2. This is the meaning of the ratio. 8 is equal to 4 is equal to 8/2. So what is the meaning? 8 is 2 times of 4. Okay beta, as the same, this is the object size of image and size of object. If answer is 2, that mean to say image is 2 times of the object. The length of image is 2 times of the object. So if we compare the size of the image with the object, this is called linear magnification of the spherical mirror. So the general definition of the spherical mirror is linear magnification. What is the ratio between the size of image produced by spherical mirror and size of object. Okay beta, is called
linear magnification is called linear magnification. Thus, what is the formula of linear magnification? Magnification, size of image upon size of object. Now beta, linear magnification, you can say height of image and height of object. Height of image upon height of object, HIHO, height of image upon height of object. This is in short form is written as HI upon HO. And also I will prove this formula by the derivation. Let's see. See the proof for concave mirror. Beta, this is concave mirror. Huh? Hey, M1, M2, pole, principal axis, focus, center of curvature. So sorry dear students. Oh, object coming from focus, center of curvature, retraces on its path, interact as I dash, this is O dash, A, B. My dear students, I'm sorry. It will be beta. It will be. Why? If rays start from O, then reflect from I. ऑब्जेक्ट से रेज स्टार्टअप होके कहां से बेटा पास होती हैं? इमेज के टिप से. Now I want to say to you beta, angle of incidence, angle of reflection, I equals R. Okay, this is 90 degree. Angle O dash is equal to angle I dash, 90 degree. So this is automatically equal. Angle O is equal to angle I. Remaining angle. So both triangle O dash P is similar to triangle I dash P. So the ratio of the corresponding side is same
in this triangle pi dash, in this triangle po dash. Dear students, I dash is size of the image, that's I wrote by I. O dash is size of the object, that I wrote O. You have to understood I dash is downward, so we'll take in minus, and pi dash is distance of image, and in opposite direction, so we'll take in minus sign. Po dash is distance of object, so we'll take in minus sign. This is called magnification. So now magnification is I upon O is equal to minus V upon U. Okay, and I want to say to you something other else. What is, my dear students? Let's see for the convex mirror. For the convex mirror, pole F, C, object yes, 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 retrace on its path, O dash, I dash, you know very well. So we have to do something other else. What is that? Trying to understood here, beta. Just like this, take a ray from O and go to P. I want to say to you with very smartness, you have to see this. What is that? 1 minute. Dear students, a ray just like this, O to P, O to P, as same I started O to P. Very important this rule, that's I told you. And this ray will be reflected by the mirror, yes, and appears to coming from I. Appears to coming from I. This angle is equal to this angle. You can say also, no problem. And this is R, so this is also R. And triangle understood. Triangle O dash P and triangle I dash P similar. Why, beta? Because I equals to R. Okay, this is 90, this is 90. So third angle already same due to remaining angle. Both triangle are similar. If triangles are similar, then corresponding side ratio is same. Pi dash, Po dash, beta I dash
इस आई एम सॉरी, जब मैंने फर्स्ट बार ओ डैश लिया है, ओ डैश मैंने फर्स्ट बार लिया है, तो मुझे पहले तो आई डैश अपॉन आई डैश अपॉन ओ डैश, देन पी आई डैश अपॉन, करेक्ट आई डैश साइज ऑफ इमेज, ओ डैश साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पी आई डैश V P O dash U. But I want to say to you, I dash is upper side, so we'll take positive up. But V, what is V? In this direction, so positive. U in this direction, minus U. This is called linear magnification. You can see beta, both formulas is same. Okay? And I want to say you something. मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी कहना चाहता हूँ. What is that बेटा? For the linear magnification is that if image is real, what will be the magnification? If image is real, for real image, beta, for real image you can understood magnification is I upon O formula. For real image is downward, so negative sign. Object is always upward, so positive sign. So magnification is negative. That mean to say कि अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना. एंड आल्सो अगर इमेज वर्चुअल है, for virtual image what is magnification? Beta, virtual image is always upward, so we'll take with positive sign, and object is always upward, so it is also positive sign. So the total magnification for the real image, either convex mirror or concave mirror, it will be हमेशा positive sign. कभी ऐसा नहीं होगा ये negative sign हो. अगर और इमेज जो है वर्चुअल है तो. एंड कुछ जरूरी बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं. व्हेन यू यूज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, एंड इफ एनी वैल्यू इज अननोन, दैट मीन टू से द न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द मैग्निफिकेशन फार्मूला, सो नेवर यूज द साइन विथ अननोन वैल्यूज. अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैग्निफिकेशन में कुछ अननोन क्वांटिटीज हो जिनकी वैल्यू आपको न्यूमेरल नहीं पता हो 1 2 3 4, तो आप कभी भी U V I एंड O पुट करते समय कभी भी आप इनके साथ साइन नहीं यूज करेंगे. ये ऑलरेडी मैंने फार्मूले में यूज कर दिया है. एंड सेकेंडरी आपको बता दें, अगर आपको m की वैल्यू पता है, मतलब मैग्निफिकेशन आपको दिया है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो at that condition you will use the sign. Okay, that if real image is 2 times grow, that mean to say you will use as the value of m is -2 for real image. अगर आपको मान लीजिए निगेटिव दिया क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो आप क्या यूज कर लोगे? +3 यूज कर लोगे. ओके, वैल्यू प्रोवाइड की गई है तो फॉर मैग्निफिकेशन. ओके, एंड समथिंग अदर इज दैट आई विल टेल यू इन द न्यूमेरिकल्स. मैं आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ बातें बता दूंगा. हाँ, एक बात मैं आपको और यहीं पर कहूंगा कि अगर कभी भी आपको मैग्निफिकेशन 1 मिलता है, इफ यू हैव अगर आपको कभी भी मैग्निफिकेशन 1 मिलता है, दैट मीन टू से कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज. अगर मैग्निफिकेशन 1 मिलता है, ओके, एंड इफ +1 मिलता है, दैट मीन टू से आपकी जो इमेज बन रही है वो इक्वल होने के साथ साथ रियल भी है. ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होने के साथ साथ रियल भी है. अगर आपको कभी भी मैग्निफिकेशन मान लें निगेटिव साइन मिलता है, कभी भी अगर आपको मैग्निफिकेशन निगेटिव साइन मिलता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो रियल है. ठीक है ना, एंड रियल है तो फिर डाउनवर्ड होगा, दैट मीन टू से उसको बोल सकते हैं आप इन्वर्टेड होगा. और अगर आपको मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव साइन मिलता है तो बता तो दिया, वो तो
वर्चुअल होगा ही होगा। एंड नाउ लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।